नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। और मेरा रुख पर हम लोग आज की हमारी क्रिकेटिंग स्पेशल सीरीज जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ऊपर है, जो हम पिछले सारे जब से सीरीज स्टार्ट हुई तब से हम लोग कर रहे हैं और हमारे साथ में हमारा पूरा पैनल है। तो सबका बहुत बहुत स्वागत। अनूप, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेवी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ एक और फ्रेंड है जो कुछ समय में जुड़ेंगे। आई थिंक ही इज रेडी। सो यस, राम। राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सो थैंक यू। आज जो हम लोग जानते हैं सीरीज जो है हमारी, ये 1-1 पे स्टैंड कर रही है, इक्वल है। और अगर सीरीज स्टार्ट होने के पहले कोई ये कहता भारतीय टीम को कि आप मेलबर्न में जाएंगे 1-1 के साथ में, तो शायद भारतीय टीम उसे दोनों हाथों से बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। अब तक की जो सीरीज हमने देखी, पर्थ से जो शुरुआत हुई, बड़ा ही एक इंडियन टीम का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा, स्पेशली आफ्टर गेटिंग ऑल आउट ऑन 150। फिर उसके बाद बाकी के 2 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा डोमिनेट किया। पर जो ब्रिस्बेन का टेस्ट था, उस ब्रिस्बेन टेस्ट में जो आखिरी के 35 ओवर्स थे, 35 ओवर इन द सेंस जो लगभग 15 ओवर आकाशदीप और बुमराह ने बैटिंग करी और उसके बाद लगभग 18-20 ओवर जो इंडियन टीम ने बॉलिंग करी, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जो है वो भारतीय टीम की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में एक बड़ा बदलाव हमने ऑस्ट्रेलिया टीम में देखा कि उन्होंने अपने ओपनर, जो नए नए ओपनर थे मैक्सवेनी, उनकी जगह कोई और दूसरा ओपनर उन्होंने टीम में इंक्लूड किया है। 19 साल का लड़का है, बड़ा ही यंग एंथुजियास्टिक पैशनेट क्रिकेटर है और अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने वाला है। सो लेट्स सी ये चीजें कहाँ पर और किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। आज के इस प्री मैच प्रीव्यू शो के अंदर हम लोग मेलबर्न टेस्ट के ऊपर बात करेंगे, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे एज यूजुअल, थोड़ा सा पिच वेदर के ऊपर बात करेंगे और ऑफ कोर्स हम लोगों के हिसाब से हमारी क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है और क्या मैच का प्रेडिक्शन हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। सो मेरे साथ मेरे 3 दोस्त यहाँ पर है। एक दोस्त अभी नहीं है, वो मिस कर रहे हैं हम उन्हें, सिद्धार्थ। अनफॉर्चुनेटली वो किसी फैमिली एंगेजमेंट की वजह से नहीं है, बट अदरवाइज एक वो होते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है। सो लेवी, अनूप, राम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस शो के अंदर। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद अनूप का, जिसने मुझे इनवाइट किया इस शो में। आई रीच्ड आउट टू हिम एंड मेरा एक्चुअली क्रिकेट का थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। रणजी के लिए सिलेक्ट हुआ था मैं, पर मेरे पापा मुझे जाने नहीं दिए। Anoop knows we are South Indians, so we either become doctors or chartered accountants or engineers. Sports का कुछ था नहीं back in the day, तो उस चक्कर में फिर क्रिकेट मेरा जो पहला प्यार था वो मेरे से छूट गया। And I saw some of your content online, and I'm actually known, and Anoop knows me very well. I'm known for giving really honest, brutal opinions about certain things, and I would say 99.9% of it are factual, and generally people who get offended, मैं बोलता हूँ facts don't care about feelings. So hopefully हम कुछ I can contribute to your already excellent content on this show. Thank you for inviting. परफेक्ट। सो आई थिंक हम लोग यहाँ पर बड़े ही एक दूसरे के व्यूज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अपने अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। सो अनूप, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ कि क्या क्या लग रहा है इस मैच के को लेकर। आप मेलबर्न में है, एमसीजी में ग्राउंड है। सो सबसे पहले बताइए कि आप मैच देखने जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले। पहले तो as always Rahul, thanks for inviting me to the show. It's a pleasure being in the show. Firstly, I will start by saying Merry Christmas. It is a beautiful festival. It is one of my favorite festivals of the year, and बड़ा ही अच्छा माहौल होता है यहाँ पे. And obviously Christmas is a very important festival. I am in the true Aussie spirit. I've got a nice beer in my hand, and that's how we celebrate the summer. It's summer here, so we start off with that. So आपने जो सवाल पूछा क्या माहौल है, बहुत ही रोमांचक माहौल है अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। बड़ी ही अच्छी सिचुएशन में ये सीरीज है। जैसे आपने स्टार्ट में बताया, अगर किसी ने इंडिया को बताया होगा कि आप 1-1 होंगे when you come to Melbourne, तो I think India would have taken it with 2 hands, because the series का जो स्ट्रक्चर था, जैसे हमने काफी अदर
बाकी से डिस्कस किया था, इट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन सच अ वे कि जब तक आप मेलबर्न पहुंचोगे तब तक ये सीरीज या तो 2-3-0 होगा उनके पक्ष में, या एटलीस्ट दे विल बी लीडिंग द सीरीज, बट इवेंचुअली इट हैज नॉट हैपेंड लाइक दैट. देयर वाज अ सरप्राइज विन इन पर्थ, an expected loss in the day-night test, and obviously the third test, like definitely Australia had the upper hand, but courtesy of rain and an absolutely great fight back by Bumrah and Akashdeep. And I will stop there because I don't think, barring that and Jadeja and KL Rahul, I don't think any other batters have done anything there to be talked about. Anything Right. there, it was Akashdeep, Bumrah, Rahul, and like Jadeja who did the impossible to get India out of the hole. तो बड़े ही रोमांचक मुकाबला होगा. Weather is going to be very hot, and I expect the conditions to be very difficult for whoever is going to play. Even for Australia, it's going to be a very tough condition. So all in all, I think अगर आप पूछोगे कि क्या माहौल है, तो एकदम रोमांचक माहौल है. पूरा सा crowd expected है. About 90,000 people are expected. Boxing Day is a very very popular event, and Boxing Day tests are given to like really big things. So India Australia is one of the biggest series. या तो Ashes होगा तो होगा. तो all in all, I think it will be a great test match tomorrow morning. राइट. तो लेवी, क्या होता है कि जैसे मेलबॉर्न की अगर बात करें और एमसीजी की बात करें तो वहाँ पर इंडियन सपोर्टर्स होना वो एक बहुत आम बात है. मेरे ख्याल से ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अवे टेस्ट मैच जैसी फीलिंग होगी, और इंडिया के लिए लगेगा शायद वो मुंबई में, बेंगलोर में या कोलकाता में कहीं पे खेल रहे हैं. उस तरह की फीलिंग शायद भारत की टीम को वहाँ पर मिलेगी. तो कंसिडरिंग वहाँ का वेदर और कंसिडरिंग दी जो लास्ट टेस्ट मैच के अंदर जिस नोट पे वो टेस्ट मैच खत्म हुआ था, वहाँ के बाद आप दोनों टीमों की एक मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी फीलिंग, और क्या सोचते हैं कि कैसे मोरल किसका हाई होगा, कैसे मैच आगे बढ़ेगा? No, it's a very good question. मुझे ये लग रहा है कि I think India will go in a very positive mindset. वो अपने आप को लकी मानेंगे कि ये पिछला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया. बहुत लकी मानेंगे क्योंकि they got, वो कहावत है ना, saved by the skin of your teeth, right? It was very close call. We got lucky with the weather. Also, we showed some excellent rear guard action by Bumrah and Akashdeep, so that was good. तो क्राउड को तो आपको पता है कि वहां पर it will be, I think 60% Indians, 40% Aussie. I think it's going to be an even keel, but it's going to be very exciting. मुझे तो crowd का, it'll be exciting times to be someone who goes in the crowd. They'll have a fantastic time. Atmosphere will be top notch, one of the best you can get in Australia in the entire year for any sporting event. That will be it. Boxing Day test, day one, India and Australia. It's a blockbuster. To come here 1-1, India would have taken it any day. However, they will be slightly disappointed because of their batting has not clicked in the previous two tests. They will be highly disappointed. Coming in with great batting lineage and a team, so they'll be, I believe they'll be extremely disappointed. And I think this is a good opportunity, अच्छी opportunity where they will want to make a better showing for themselves within the laundry list of great batting, on record. So they've got great talent. It's a question of now getting it together. One thing I will add to this is this previous test that they saved, they would think that as an opportunity. For now, we're coming to the closing, the latter half of this very long but very hard fought series. They would think that now it's like a cheetah who's waiting in the thing, but now it's the time for them to recoil and jump on them, because only two test match to go. If their batting can click, trust me, Australia will be shaken to the core. That is what I can give you a guarantee. If Indian batting clicks, Australia don't stand a chance, no matter what it is. They've got a new batter opener. Again, he'll be under pressure because the opener who came in for the first three matches didn't perform well. He was found out. And no matter how big or promising a new player is, they are under intense pressure. Say 90,000 crowd in front of a Bumrah facing first up
It's not going to be an easy task at all, and they will be under tremendous pressure to perform. So I think all in all, I think India are well positioned if their batting can click. As just last part is that as Anoop Bhai said, it's going to be hot and humid. At the I don't know what humidity, but hot it will be. The pitch is going to have a good carry. Akashdeep will be a good pick, but win the toss, bat, and have the courage, because Boland will be with his tail up, and you just have to negotiate, dig in, just play hard and get the batting, put a runs on the board, and you will see how the Aussies crumble. And that's what I believe. Thank you. Absolutely. So Ram, if I carry what, yes, Anoop. Yes, Anoop, you were saying. Rahul, before you go to Ram, I just want to add one point, if it is okay. I have been to the MCG for a Boxing Day test, so I'll just share a couple of insights which might be useful for our audience who watches it. It is not a 60-40 there. It will be 80-20. Okay, 80% will be Indians. There is about 20% of Aussies who come to watch the game. It is an electric atmosphere. I've actually been to an India-Australia Boxing Day test, and it is an electric atmosphere. The crowd will be completely full. It will be 80-20. Generally, Melbourne weather-wise will not be humid. It is very dry weather. तो यानी it will be like अगर आपको मैंने एक गरम तेल में डाल दिया, अगर मैं हिंदी में बोलूं, तो आपको जो फीलिंग आती है, अगर मैंने एक भजिया को गरम तेल में डाल दिया तो जैसे होता है वैसा एक एटमॉस्फेयर होता है 40 डिग्री टेम्परेचर. नाउ आई लीव इट टू यू एंड राम. Okay. So Ram, as Levi mentioned here कि एक बैटिंग साइड की बात करी, फिर उन्होंने बैट फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रन्स होते हैं वो बात करी. तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इट इज द गेम बिटवीन टू वल्नरेबल बैटिंग साइड, तो अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. अगर हम ऑन पेपर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की बैटिंग लाइनअप को देखें तो शायद ऑन पेपर उनसे बेहतर और कोई बैट्समैन होंगे नहीं अपने अपने लेवल में, और विच इज ट्रू इन वन सेंस. बट उस क्लास को जब तक परफॉर्मेंस में हम लोग उतरता हुआ नहीं देखेंगे तब तक चीजें थोड़ी सी शेकी ही दिखेगी, और जो अब तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी देखने को मिली है. विन द टॉस, बैट फर्स्ट, पुट द रन्स ऑन द बोर्ड, ये कितना इंपॉर्टेंट है. अगर ये चीज भारत कर पाती है तो ये टेस्ट मैच को किस दिशा में लेके जाएगा. So that's a great question, Rahul. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है. My lizard brain is telling me कि the pitch for this match is going to be a slow pitch. Couple of reasons for that. Travis Head has had a groin injury. Now Aussies are they no pussies, right? So they pussycats जैसे वो सहम के नहीं बैठते, right? They are tough. तो उन्होंने बोला होगा भाई buck up, just have a couple of beers or whatever, थोड़ा rest कर लो, batting practice मत करना because तुम ऐसी अच्छे फॉर्म में हो. So I think Travis Head would have loved to play this match with 100% fitness. Something tells me he's not 100% based on the reports, and मैंने उनके ME के reports भी पढ़े and basis on all of those things. I think because of Sam Constas also debuting, and it's a very key role, and I believe he's going to open. या तो वो opening होंगे या runner में होंगे, but I think he's probably going to open, face the first ball. Khwaja usually doesn't face the first ball of any first match, except for maybe the Pakistan series. Khwaja ने कभी first ball face नहीं किया. वो शायद उतना दिलेर नहीं है, I guess. First ball कभी face नहीं करता. It's not superstition, something like that. तो मेरे हिसाब से ये pitch थोड़ी slow होने वाली है because I think they want to negate. So ये fourth test जो है बुमराह versus ऑस्ट्रेलिया का, this is very very keen for. I didn't say India versus Australia. I said Bumrah versus Australia. It's the fourth test border Gavaskar trophy, Bumrah versus Australia, because मैंने एक पोस्ट किया था, I think ट्वीट भी की थी इस पे कि India is playing with about 3.5 players. Okay, so Bumrah is one, Jaiswal आधा है, Reddy is one, and बाकी जो है आधे आधे में 3.5 लोग ही खेल रहे हैं, right? Jaiswal का ऐसा है कि apart from one match that he really performed well, apart from that, he hasn't really been performing, right? And this is kind of like sales, in an organization, you cannot have your sales team perform for one quarter or one particular month and then do nothing for the next 5 months. You would be fired, right? So point ये इसमें यही आती है कि हमारा जो बैटिंग लाइनअप है ऑन पेपर
it's the best in the world on paper. Okay, but the issue over here is that our top salespeople, our top, the people who play, right, the batsmen who set the tone, they are really not performing well, and वो उनका फॉर्म का प्रॉब्लम नहीं है, कोहली का फॉर्म का प्रॉब्लम कभी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. कोहली का अभी तक का जितने भी आप डिसमिसल्स उठा के देख लो, इट इज जस्ट बीन दैट स्मॉल लैप्स इन कंसंट्रेशन. वो स्वीप के बदले में वो कुछ ऐसे मारने को गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड इट वाज अ लॉली बॉल. लाइक 9 out of 10 times he would have either nudged it for a single, or maybe like 2 out of 10 times he would have even hit it towards the leg side for 4. ओके, वो कहाँ जाएगा वो पता नहीं, हो सकता है कि लेग पे जाए, मिड ऑफ पे जाए. सो दैट ही गॉट बोल्ड ऑन, राइट, बोल्ड हो गया उस बॉल पे. विराट कोहली का इट्स शॉट सिलेक्शन, एंड आई थिंक देयर इज आल्सो दिस वीडियो व्हिच हैज बीन फ्लोटिंग के सचिन का वो एक इनिंग्स था 200 प्लस का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेयर ही डिड नॉट प्ले अ सिंगल कवर ड्राइव, राइट. वो ऑब्वियसली दैट टाइप ऑफ माइंडसेट, वो टिपिकल मुंबईकर वाला माइंडसेट इज इट्स वेरी क्रेजी, एंड बहुत कम लोगों में वो होता है, right? That kind of perseverance. It's not determination, it's perseverance. Okay. Kohli में वो नहीं है. So people like Kohli and Gambhir, they cannot sit quietly in a chair. वो ऐसा हमेशा ऐसा हिलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे. That is the excess bubbling energy that comes out of them, right? So they are not known for patience, right? But यही चीज अगर हम जायसवाल में देखो, जायसवाल हो या राहुल for that matter is a classic example. वो 50 बॉल में भले 1 या 2 रन मार दे, बट आफ्टर दैट ही विल स्लोली पिक अप हिज इनिंग्स, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर मैच हो ये रहा है कि बुमराह का ना ही बॉलिंग में कोई साथीदार है, ना ही बैटिंग में कोई साथीदार है, बिकॉज बैट्समैन आर सपोज्ड टू सेट द पेस, लाइक व्हाट यू राइटली सेड. बैट्समैन अगर एटलीस्ट एक 350 400 मारे. राम, मैं आप सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा. बुमराह के ऊपर हम लोग आएंगे, स्पेसिफिक उसके ऊपर बात करेंगे. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो फर्स्ट इनिंग के जो रन होंगे, अगर मान लीजिए इंडिया बैट फर्स्ट करता है और 400 रन बोर्ड पे लगा देता है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो कितने साइकोलॉजिकल प्रेशर में होंगे? सी, मेरे हिसाब से इंडिया को पहला बैटिंग नहीं करना चाहिए. आई थिंक दे शुड ब्रेक द पैटर्न. मेरे हिसाब से उनको अपना पैटर्न ब्रेक करना चाहिए. अगर गलती से रोहित शर्मा टॉस जीत जाता है, जिसके इनकम ज्यादा है, विराट कोहली एज कैप्टन हैज वन अ लॉट फ्यूअर टॉसेस देन रोहित शर्मा हैज, बट रोहित शर्मा अगर टॉस जीतता है, ही शुड बी लाइक, यू नो व्हाट, वी जस्ट गोना बॉल फर्स्ट. वो बुमराह का कहर जो है ना, राइड दैट वेव. ओके, बुमराह का जो कहर है, राइड दैट वेव. अगर पहले गलती से हमने बैटिंग कर लिया और हम अगर 150 में आउट हो गए, तो बुमराह का कौन सा कहर होगा उसमें? The team would be like, okay, 150 हम कर ही लेंगे, बुमराह का सारा बॉल हम लीव करेंगे. They may have that kind of mindset. And Constis, right, he is actually known for charging at the fast bowlers and hitting them. He's not someone who will play like a typical Pujara or a Dravid or Lakshman type of innings, right? Or for that matter, Travis Head or even David Warner. वो charge करता है, और उसने अपने statement में बोला भी है बात को. So मेरे हिसाब से अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम इस वाले विकेट में, बॉक्सिंग डे वाले विकेट में, वी शुड एटलीस्ट लाइक 400 या 400 से थोड़ा अधिक हमको करना चाहिए. बट मेरे हिसाब से अगर हम टॉस जीतते हैं, आई थिंक रोहित शर्मा शुड ब्रेक द पैटर्न एंड ही शुड बेसिकली गो फॉर फील्डिंग. राइट. सो लेवी, अगर मैं आपके पास आऊं और ये पूछूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो नया ओपनर लिया है, तो वो क्यों लिया? उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रही होगी? I believe कि स्टैम कॉन्स्टेंस ने, आई थिंक जो प्रेसिडेंट्स 11 प्राइम मिनिस्टर्स 11 था, उसने वहां पे अच्छा परफॉर्म किया था. इट वाज कमांडिंग परफॉर्मेंस ही गेव. उसके बेसिस पे इनको मिक्सवीनी के का रिप्लेसमेंट मिल गया. मिक्सवीनी वाज स्ट्रगलिंग, राइट, and I think it is the perfect decision, from a very natural and a decision that and a logical decision that Australia has taken. जैसे रामाई ने कहा, he is a very aggressive batsman. He takes on the bowlers, right? तो वही तरह का, and that fits right nicely into the Aussie attitude of just the fighting kangaroo. I mean, so I think ये जो रिप्लेसमेंट किया है, मुझे अच्छा लगा इसका. अभी 2 टेस्ट बचाए हैं, और अगर इनफॉर्म बैट्समैन को अब मौका नहीं दोगे टू ब्लड देम इनसाइड, then I think they'll be missing a trick.
So I think Australians have done well. They've picked Sam Constas, and I think it's a good sign for the Australians. जी. राइट. सो अनूप, आप जैसे पिच और वेदर की आप बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया एक हॉट वेदर रहेगा, एक ड्राई हीट रहेगी मेलबोर्न में, तो ओवरऑल और मेलबोर्न का जितना मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा सिटी है ऑस्ट्रेलिया का जहाँ पर लोग एक दिन में 3 तरह के वेदर जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, गर्मी भी, बारिश भी और ठंडी. सो ओवरऑल 5 दिन अगर हम आने वाले देखें 26 तारीख से शुरू होते हुए, तो क्या वहाँ का वेदर फोरकास्ट है और प्लस पिच कैसी है? ठीक है, तो पहले तो वेदर आपने सही कहा. मेलबर्न का जो वेदर होता है वो हर दिन हम मिनिमम ऑल द 3 वेदर पैटर्न्स एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे. दैट इज हाउ द वेदर इज. वेदर इज एक्सपेक्टेड कि फर्स्ट डे जो है इट्स गोइंग टू बी भयंकर हॉट. एज आई सेड, इट्स गोइंग टू टच 40 डिग्री टेम्परेचर. उसके बाद के एक आध दिन माइट बी अ लिटिल बिट मोर कोल्ड, a bit more cooler, not cold, bit more cooler. So the weather is going to be very fluctuating. इसके लिए जब मैंने स्टार्ट में कहा था कि this weather is going to be challenging for Australia as well because of the fact that ये एक सही का weather नहीं होगा. शायद first एक आध दिन will be very hot. उसके बाद शायद वो थोड़ा cool down होके the weather might change. So the pitch might also behave very very differently. Just to add to what Ram said, right? Because of the weather condition that is expected to be prevalent tomorrow. मेरे मुताबिक अगर टॉस इंडिया ने जीता, एंड आई थिंक रोहित हैज वन मोर टॉसेस इन द सीरीज, तो आई थिंक इंडिया विल गो इन विद द ऑप्शन टू बैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी यू नो लाइक डिफिकल्ट वेदर. और जैसे मैंने लास्ट वाले शो में कहा था, राइट, अगर पिच में काफी चीज है, अगर कोई ऐसा, आप इंग्लैंड ले लो, राइट, इट्स जनरली अ सीमिंग ट्रैक इन इंग्लैंड, राइट. आप जब बॉलिंग करते हो तो आपके पास वो एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ अ सीमिंग ट्रैक. जनरली ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में क्या होता है कि वो इनिशियल मूवमेंट होता है पिच में, लेकिन वो इंग्लैंड जैसा सीम नहीं करता है. तो व्हाट हैपेंस इज, अगर आपने पहला बॉलिंग लिया, एंड विद, जैसे वी ऑल नो, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बुमराह इज योर ओनली बॉलर, बिकॉज ना सिराज, ना आकाशदीप, ना हर्षित राणा, नेदर कोई स्पिनर has performed to the level of Bumrah, right? It's actually like what Ram said, right? It's Bumrah versus Australia, right? तो अगर आपने फर्स्ट बॉलिंग लिया तो समझ लीजिए, if you don't get the initial wickets, what is going to happen is you are going to be sweltering in that heat with probably 1 or 1.5 bowlers. हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा रन बनाया तो then you will be under pressure because आपके बैटिंग is already under pressure. तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग किया, let's say they make 400 and they give you the option to bat, and let's say you have a batting failure, you are already looking one behind in the test, right? So मेरे मुताबिक अगर टॉस जीते तो given the weather conditions and given the fact that your bowling attack is not as powerful, I would say that also the weather is expected to fluctuate during the 5 days. तो it is quite possible कि by the time आप 4th day तक आते हो, अगर 4th day तक ये मैच गया तो it's quite possible that a person like Nathan Leon from Australia, या तो फिर अपने तरफ से, या तो जडेजा, whoever plays that game, right, the spinner will also come into force. तो वो शायद second innings में there is a good chance that the spinner might come into effect. So I think if you go in with that option, because of the fluctuating weather and the expected heat, maybe it will benefit the team batting first is my view. But the pitch is expected to be a pretty fast track. It's not expected to be like how Melbourne has behaved in the last few years in domestic circuit, जहाँ पे बहुत सारा movement and the sides batting have struggled. The curator has said it's going to be a good fast track, but it will not be like a bowling paradise. Right. So I'll bet you a pint of beer that Australians are going to do something that no one else is expecting. मतलब expectation set करके रखा उन्होंने कि fast है, bouncy है, and all those things. But मेरे हिसाब से the Australians have realized this. The only way to negate an India win for this series, या तो बुमराह को kidnap कर लो, या तो उसको negate कर लो. Kidnap तो करेंगे नहीं, तो negate करेंगे. The way they will negate is, they will kind of, the wicket is going to be very slow. मेरे हिसाब से, or much slower at least. मेरे हिसाब से ऐसा होगा. Because अगर उन्होंने fast bouncy wicket बना दिया तो and that's another issue. Just small thing, राहुल, मुझे एक चीज बोलनी थी कि I completely agree with Anoop. इस wicket में 99% it has to be batting first. Problem is I don't trust our batsmen. ठीक है, अभी तक हमको bowlers ने जिताया है. पहला टेस्ट भी ठीक है. I think the second test also we got a little close because of the 76-for-7 collapse, right? Otherwise मतलब batsman ने कुछ खास नहीं किया है अभी तक, right? मेरे हिसाब से that's exactly why I was saying the moment Constas comes in,
What are the chances that Constance is going to be sleeping like a baby tonight? What are the chances he's going to be sleeping must tucked in? No, I think he's not going to be able to sleep. The first thing he's going to do is face Bumrah tomorrow. My point is capitalize on that. It's just a mental game. वो बोलते हैं ना follow on करने से better है कि उनको बोलो फिर से batting करो आके. It's like that. Right? Instead of us अगर follow on situation होता है, then it's like a mind game, right? What you do. वही same चीज इसमें भी है कि I don't trust our batsmen. Rohit Sharma is going to open, so we can expect about 8 or 10 runs from him. Virat Kohli is going to come number 2. KL Rahul is going to stick there. Jaiswal से भी हम 15-20 run expect कर सकते हैं. So I could be wrong, but 50 for 4 या 50 for 3 is what we will be tomorrow. Most often than not, I'm generally right about these things. अनु को पता है मैं मैच के बहुत पहले ही predict कर लेता हूँ क्या होने वाला है. And generally it turns out to be right, but sometimes I'm wrong. Yes, I hope tomorrow I'm wrong with this. Hope we are like 200 for 0. But Rohit Sharma is probably going to open. So I think we should bat first or bowl first, but I don't trust our batsmen. That's why I said. But Anoop is right. Okay. So, Levi, I am coming to you with the most obvious question, the team combination. You have shared your Aussie team. Yes, I think they have declared, right? They have declared their team. Yes, mate. So they've already declared their team, Rahul, and it's exactly the same team that is there on the screen. There is absolutely no change to that team. The only difference being that Boland has come in for Hazelwood. So जो team Levi ने आपको यहाँ पे बताया है, that is exactly the team that is going to play tomorrow. Right. So Levi, I will come to you with your Indian team prediction. Yes, please walk us through. Thank you very much. I have gone a bit bold here. I just believe that the new Tanush Kotian should be given the chance. Baptism by fire on Boxing Day. He's a good talent. He has performed well recently. No better time to blood these youngsters than give him a chance. Gill is not doing well, low on confidence, is not performing. We just need to, give this young gun a chance to shine. Right, it's a best opportunity. So I've put him there as a replacement for Gill. मैंने reluctantly Siraj को रखा है. He's not my favorite pick at all. He is. I just noticed that he just puts the ball. He doesn't put any effort. He just puts the ball on an outside. If you see the runs given away by him, he bowls like a millionaire. Not my favorite, but we don't have a optimum replacement for him. So I've picked him for just to be there. Prasidh Krishna, because it's going the kind of wicket that we've just been discussing, I've selected Prasidh Krishna to be included in the squad. So you've got Jasprit Bumrah, Prasidh Krishna, Siraj and Akashdeep as the 4 pace bowlers, Jadeja as the spinner. I believe Tanush Kotian also bowls. Yes, he's off spinner. He's an off-spinning all-rounder. Off-spinning all-rounder. And that's one of the reasons I also picked him when I was looking at his batting and bowling. He's a batting all-rounder. So I think it is a good balanced side. And I think we should be in a good shape by presenting this team. Thank you. Right. And recently, Tanush also scored a century in domestic circuit. अरे सेंचुरी तो मैंने भी 2 बनाया है, बट पॉइंट ये कि इसमें इन माय ओपिनियन आई थिंक Reddy has been very consistent, so I would still give Reddy that space because he's a one proper batsman and one proper bowler. Bowler, he's kind of like Hardik Pandya. वो कभी विकेट लेगा तो लेगा, but at least वो runs उतनी लीक नहीं करता जितना हार्दिक पांड्या लीक करता है. So yes, so Ram, I will come to you with your Indian team prediction. So first, I think I have the data from Anoop, so I will go to him. Anoop, yes, please. Okay, your thoughts. Sure. I will first talk about the Australian cricket team. So the squad that's been selected. So maybe if it's okay, Rahul, can I go for the Australian team? So firstly on Constance, right? I think
इट्स अ ग्रेट सिलेक्शन. उनकी सिलेक्शन के पीछे दो मेन रीजन है मेरे मुताबिक, और जो नेशनल सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने भी बताया. Constas has been selected first to change and shake up things because उनको लगता है कि both McSweeney and Khwaja play a very similar brand of cricket, right? उनका है कि like you build an innings, and against Jasprit Bumrah, what is happening is there is nobody who's shaking up the apple cart, right? So you're allowing a player like Bumrah, who's an amazing bowler, to virtually run riot, right? Essentially, you're not doing any changes. जो David Warner के टाइम पे क्या होता था कि David Warner was an aggressive opener, Usman Khwaja was more a conservative opener. So वो combination एकदम perfect बैठ रहा था क्योंकि David Warner used to be quick off the blocks. That gave Khwaja enough time to play his natural game, right? अब क्या हो रहा है कि both Khwaja and McSweeney play very very similar form of cricket. That's one of the reasons why Constas has been picked, because he's generally an aggressive opening batsman who does not bother about reputation. His job is to go out there and play. So Australian team में Constas को लेके आने की यही वजह है. It's a well balanced squad. I would say that it's a squad that is fit for the condition, because Boland has got an amazing record in Melbourne. अगर आप उनके MCG के record को देखोगे तो it is like Don Bradman's record in batting over obviously not that long a time, but उनका जो bowling record है बहुत ही अच्छा है. And Smith is coming from a century. Carey has been in good form. So, and the big news is obviously Travis Head has been picked just on the basis of the fact that you cannot afford to leave Travis Head at this point of time, because you're going to then have a very, very young squad playing it, because you have to get somebody like a Bow Webster into the team. That will become too easy. In the sense, it will be advantage India. So this is a good Aussie 11. Okay. Right. So Anoop, right. So there are few rumors around Travis Head that he is not 100% fit. So is it? He's not 100% fit. He is not 100% fit. These are actually rumors, or maybe actually he is not fit. He is fit to play, but I wouldn't call him that 100% fit, because उनका जो problem है वो quad का problem है, and quad का problem generally like एक week में ठीक नहीं होता है. Quad and groin. Yeah, it doesn't get okay in one week, but क्या है कि because of the fact that अगर आपने head को भी निकाल दिया, so it will be very difficult for Australia, because he's the man in form, and then you have to get another youngster, right? Like either या तो आपको English को लेके आना पड़ेगा, या तो आपको Bow Webster को लेके आना पड़ेगा, which is a good choice, but लेकिन it will become too much of an inexperienced batting attack with like the others also not performing, right? They also have a batting problem like India, right? So that is why like I would say Head is like Ram said, right? The way Australians, or I think Levy said, the way it works is he would have just told them, dude, get on with it, man. Just come out and play. So this is the Australian 11. Good squad. Let's go back to the Indian 11. I'll quickly run through them. If you can go back to the Indian 11. I have gotten Prasidh Krishna in place of Akashdeep. Akashdeep did a great job as a batsman, but I think ये वाला जो Melbourne pitch है, and also remember Prasidh bowled very well in the India A wala game in Melbourne. So unka jo performance tha, I have just brought in Prasidh Krishna. I've kept pretty much the same set of people, and like pretty much if none of these batsmen perform, then probably at Sydney you might have to get in younger and other players. But I think I would go in with the squad. Aapke jo screen mein dikh raha hai, pretty much the same squad. Only difference being Prasidh comes in place of Akashdeep. That's pretty much. I think this is a well-rounded squad. Good amount of experience there to try and get the win in favor. Right. Thanks. So Ram, I would like to come to you. What's your probable playing 11 for India? So Anoop, I would request if you can just keep the screen. So Anoop और मेरा काफी same है, except I would keep Akashdeep and take away Prasidh Krishna, because Prasidh Krishna is a delicate darling. उसका भरोसा नहीं है. वो 8-10 ओवर करके बोलेगा कि भाई मेरे को इंजरी है, वो निकल जाएगा साइड से. सो प्रसिद्ध कृष्णा टुडे इज व्हाट जसप्रीत बुमराह यूज्ड टू बी, और व्हाट हार्दिक पांड्या इज टुडे, के 8-10 ओवर टेस्ट का कुछ करा लिया तो उसको कुछ ना कुछ ही गेट्स सम निगल, और सो ही इज लाइक दैट 1956 Buick roadster. So it's an old car, but it's a good fast car, but it'll have its own niggles. So मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा and Akashdeep is a good batsman. I think we all saw that. I knew he could bat. He is what Javagal Srinath used to be, or what Zahir Khan used to be. They could bat a little, but they are not really known for their batting prowess. But I think Prasidh Krishna का होना जरूरी है, because bowling तो हम कर लेंगे, ठीक है. हम bowlers का काम है रन देना. जसप्रीत बुमराह का काम है रन रोकना और रन विकेट लेना.
वो काम हम कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है बैट्समैन का। तो जसप्रीत बुमराह और सिराज तक जितना लोग बैटिंग कर सके सबको घुसाओ टीम में, मेरा पॉइंट वो है। वी हैव टू टच 400 और उसके बाद भले हम लोग उनको 399 पे ऑल आउट कर दें, नो प्रॉब्लम, राइट? वी हैव टू टच 400। प्रसिद्ध कृष्णा कैनॉट बैट। ही इज लाइक व्हाट वी यूज्ड टू हैव बैक इन द डे, वेंकटपति राजू। बॉलर भी कुछ खास नहीं था, बैट्समैन भी कुछ खास नहीं है। सो he is one of those people, he will just bowl fast. Yes, he's better than our other probables that we had, Avesh Khan and all these people who are run machines. This guy is not as much as a run machine, but uska kafi erratic length hai. One thing I wanted to touch upon, and I guess this is one thing that I always wanted to talk about. Two things, right? One is where is Bhuvneshwar Kumar, where is Umesh Yadav, and where is Mohammad Shami? I can bet money that all three of them are currently in playing fit form. भाई एक टेस्ट तो खेल ही सकते हैं, राइट? एक टेस्ट में कितना मैक्सिमम दोनों इनिंग्स को मिला के प्रोबेबली 18 to 20 ओवर्स या इवन 30 ओवर्स तक तो कर ही सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री ऑफ देम। भुवनेश्वर हैज ऑलवेज बीन अ थिन लैड, राइट? He used to be injury prone. He is another delicate darling, but right now he is available. He's playing. Mohammad Shami is playing. Umesh Yadav, he's a fit guy. उसको बोलो कल सुबह उठ के नहा धो के आ जाएगा मेलबर्न, राइट? मेरा पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ, where are these bowlers, especially Shami? Now imagine Shami can bat as well as what he had shown earlier in the England series in 2021, and even after that many times he saved our skins, right? In my opinion, प्रसिद्ध कृष्णा के बदले में वो लोग आकाशदीप को लेना चाहिए, बिकॉज आकाशदीप का बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा के बॉलिंग में उतना खास वेनम नहीं है। लाइक आई थिंक आकाशदीप स्टिल इज रिलेटिवली फास्टर टुडे, हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा केम इनटू द सीन अ फ्यू इयर्स अगो सेइंग ही इज वन ऑफ दोस बॉलर्स हु कैन टच 150, एंड उसके साथ 147 और 148 किया भी था। बट एट दिस पॉइंट आई बिलीव आकाशदीप इज अ बेटर बेट फॉर अस देन प्रसिद्ध कृष्णा, because it's the same thing, unknown friend versus a known devil, right? It's one of those situations where I would prefer Akashdeep because he can bat deep. So that's the only reason. But in my opinion, Rohit should open and KL should drop down to number 3. Right. Okay. So Levi, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। Fine. So आपने मोहम्मद शमी की बात करी, राम। तो मोहम्मद शमी को अभी तक बीसीसीआई और एनसीए की तरफ से फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है, और बीसीसीआई ने ये क्लियर कर दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया फ्लाई नहीं करेंगे। एज फार एज उमेश यादव इज कंसर्न, ही इज प्लेइंग ऑन द डोमेस्टिक सर्किट, बट शायद सिलेक्शन कमिटी का ध्यान उनकी तरफ से आगे की तरफ जा चुका है कि दे विल नॉट पिक हिम, ऐसा मुझे लगता है। सिलेक्शन कमिटी समोसे खा रही है। सिलेक्शन कमिटी का आईक्यू लेवल बहुत लो है। सिलेक्शन कमिटी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ खास किया नहीं है एज अ प्लेयर और एज अ पैनल, एंड जिन पे ये दबदबा है। अजीत आगरकर, राइट? ही इज बेसिकली जो बॉलर थे वो अजीत आगरकर, he was one of the fastest. He's probably still, I think he still holds a record of the fastest 50 wickets in one-day internationals. Fastest to get to 50 wickets. Have you ever seen the montage of his 50 wickets? वो मारते मारते आउट हुए लोग, most of them, right? जो यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा था लास्ट में, जब वो फ्लिक किया था, अगेन 9 out of 10 times that goes to a 4, right? But वो स्ट्रेट कैच था मिचेल स्टार्क का, जो बॉल उसने फ्लिक किया था। Ajit Agarkar was a very ordinary bowler, but at that time he was one of the best we had. But he was a pretty mediocre bowler. I'm talking about him as a person. और भी लोग हैं हमारे पैनल में। मेरा फंडा सिर्फ इतना है, they were not even 20% of what Mohammad Shami is, or even 5% of what Jasprit Bumrah is. मेरे हिसाब से, and Umesh Yadav is a better bowler than Ajit Agarkar. उमेश यादव के साथ एक वरुण एरन करके आया था, वो भी बेचारा हताश होकर रिटायरमेंट ले लिया उसने। बट Umesh Yadav is playing, Mohammad Shami is playing, Bhuvneshwar Kumar is playing. How can any of these people play if they are not fit? And if they are fit, एक अंबानी को बोल दो चार्टर फ्लाइट करके आ जाएंगे। वो वाले सीट्स पे मसाजर भी होते हैं, तो they can massage their quads and all of those things. They can come full prepped onto the MCG ground. But in my opinion, Mohammad Shami is a definite miss, and I don't know whether it's politics or whether it is
just that they want to not take that chance or that risk, or I don't know what's going on. The only two things that I can surmise is their selection has been a very low IQ thing, and उनको cricketing brains नहीं है समझने के लिए, जो हम जैसे लोग यहाँ पे like I can see Levi smiling in terms of this is a very obvious thing I'm saying, ये कोई बहुत बड़ा rocket science चीज नहीं है. If Mohammad Shami is fit, he is playing right in the domestic circuit. अगर वो fit नहीं था तो या तो अस्पताल में होता या घर में बैठा होता. If he's playing, get him in. और ये चीज 2 हफ्ते पहले कर लेनी चाहिए थी, 1 हफ्ते पहले कर लेनी चाहिए थी. मतलब मेरा पॉइंट वो था. उमेश यादव इज प्लेइंग, चलो. You think Umesh Yadav is a better bowler than Akashdeep and Prasidh Krishna? He can bat as well. Umesh Yadav is a very handy batsman. Bhuvneshwar Kumar, again a very handy batsman, but is he a better swing bowler or a better bowler in general than any of these two guys currently playing? Yes. So a batsman and a bowler ka relationship is just like a marriage, right? It's a commitment and it's also a partnership, right? It's 50-50. आप रन बचाओ, हम रन मारेंगे. यहाँ पे रन भी नहीं मार रहे हैं और बाकी के बॉलर रन बचा भी नहीं रहे हैं. हमारा फील्डिंग भी काफी स्लॉपी है. पीपल लाइक कोहली एंड शर्मा, दे आर ड्रॉपिंग कैचेस एंड पंत ड्रॉपिंग कैचेस. तो बुमराह अकेला कितना कर लेगा? आई थिंक द सिलेक्टर शुड हैव थॉट अबाउट इट. एंड लाइक आई सेड, एक मेरा सीन ये है कि इफ आई नो दैट समथिंग इज अ फैक्ट, आई कॉल इट आउट. एंड मेरे हिसाब से ये फैक्ट है कि हमारा जो सिलेक्शन कमिटी है, then nincompoops. That's all I can say. Right. Okay, fine. So I think एक last segment जो मैं आप तीनों से quickly 1-2 मिनट का आंसर चाहूंगा. So your prediction, who will win? Anoop? Okay, मेरे लिए prediction wise, I would say India has the upper hand because of the fact that they've had a good 2 times performance in Melbourne. उनका जो record Melbourne में है वो बहुत ही exemplary है. And also the fact that like as you come down to Melbourne and Sydney, it starts to suit Indian conditions a lot better. Indians are a lot more at home at these 2 grounds. I think India has got a very good fighting chance, but it will purely depend on how well they bat. If they keep batting poorly, there is absolutely no chance for them to win this test match, and there is no rain expected here to save you. There is no rain expected in Melbourne until like इंद्र भगवान ने वापस आप पे मेहरबानी की और बारिश आया तो ही पॉसिबिलिटी है. There is no rain predicted, so you should expect like a full game here, and it'll be purely how India bat well. So India have the upper hand, but that's where it is. Thanks. Perfect. So Ram, 2-1 for India in Melbourne. I am completely all for what Anoop said, and I think the last test is one of the very few times that I have seen कि बारिश ने आके इंडिया को बचाया. Generally इंग्लैंड में भी हमने देखा, इसके पहले भी द फर्स्ट आई थिंक 2018-2019 BGT सीरीज जो आई थिंक Amazon प्राइम में भी आया था सीजन 1, उसमें भी हमने देखा कि लास्ट मैच इंडिया वाज गोइंग टू विन, बारिश ने आके ऑस्ट्रेलिया को बचाया. सिमिलरली हमने जो एजबास्टन में जो पहला टेस्ट था in 2021, उसमें भी इंडिया वाज अबाउट टू विन. दे नीडेड 150 odd runs in the last day, and रेन ने अगेन इंग्लैंड को बचाया. सो आई थिंक दिस टाइम, एज अनूप सेड, इंद्र भगवान या जो भी है वो बारिश तो नहीं पैदा कर सकते because it doesn't rain at this time in MCG. Right. So unless the world is for going to India. end. I think there's a 60% chance that I think there's a 60% chance that Australia wins this, and there's a 40% chance of India winning it. The only reason I say that is so I don't trust our batsmen. Right. So Anoop 2-1 India, Ram 2-1 Australia. Levi? I'll say 2-1 India. I'm confident that they got out of jail. They realized that how close they got to going down 2-1. And I think, as Anoop Vai said, coming to Sydney and Melbourne and Sydney, it favors the Indians more because, like I said, Indians look at the finishing line coming very close and they know that they have to give 2 big performances and they can leave the shores of the beautiful shores of Australia with the Border Gavaskar trophy in their back pocket and put to bed all of these naysayers and so मुझे लग रहा है कि in short India has a very good chance, but again completely depending on their batting. Their batting has failed them in the past 2 test matches miserably. This is the time to redeem themselves. This is the time for their big names
Kohli, Sharma, Pant to come good, and no better opportunity than in the MCG to just bring it home in Melbourne and in Sydney. Thank you. Absolutely. And I think लेवी जो आपने एक बड़ी important बात कही कि they have feel the jail, तो वो उन्होंने जो एक जो अपनी परफॉर्मेंस जो खराब रही है उसको मेरे ख्याल से रियलाइज किया है, और अगर यहाँ से वो एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस दे के आगे बढ़ते हैं और वाकई में अच्छा खेलते हैं, तो आई एम श्योर इट वुड बी 2-1 फॉर इंडिया. बट एट द एंड आई वुड से मे द बेस्ट टीम विन, मे द बेटर टीम विन, और एक अच्छा क्रिकेट हमको देखने को मिले. दिस इज व्हाट आई होप. आपकी प्रेडिक्शन आई सेड 2-1 इंडिया, 2-1 इंडिया. Right. Anoop, you were saying something. Yes, so just a couple of points to add there to what Levi said. Very important point to think about. India have to win just one game to retain the Gavaskar trophy, because India are the holders of the trophy, right? So if India win at Melbourne, then irrespective of the result in Sydney, it is still going to be with India in that sense. Right. India also have the added advantage that if they do win the next 2 test matches, they directly qualify for the World Test Championship, WTC. irrespective of what happens to the South Africa versus Pakistan series and what happens between Australia and Sri Lanka. One of these teams will qualify with India, but India will 100% qualify अगर उन्होंने दोनों मैच जीता. अगर इस 2 मैच में से अगर India ends up losing the series, then they are, as far as I know, they are out of the World Test Championship. They cannot afford to lose. Yeah. As so far as I know, कर सकते हैं, lose नहीं कर सकते. So something like that, right? And if that happens, then there is a good chance. I mean, for another show we can talk about sometime later in the future. But I think that will probably be the end of the road for Rohit Sharma, because I don't think he's going to, wanting to be playing the 5 test series in England, which is another 6-7 months away. There's a good chance that you might have one more major retirement coming up from the end of Australian tour, probably with Rohit. But again, if India do qualify for the World Test Championship, I think there is a good chance that Rohit will want to leave, very much like how he left the T20 as the World Cup winner. He would want to give that one big shot, because it will be the 3rd time India will go into the finals again with an opportunity. So India has got all to play for. Australia also has got all to play for, because if they do win the 2 games, Australia has the advantage of going to Sri Lanka and performing there and still having an opportunity. So Australia has got a lot more chances to qualify for the World Test Championship. South Africa are at the pole position, because they are playing Pakistan at home, and they just have to win, I think, 1 game or something like that to qualify. So all in all, India has to win the 2 games in simple fashion. If India को qualify करना है to the World Test Championship, they do have to win the next 2 games without any mathematical magic coming in between. Yeah, absolutely. Okay. Just one small thing I want to say, like a punchline, please. so that you can conclude. The punchline is to Levy's point earlier, right? I don't think India has learned from their mistakes or that get out of jail free card which they got. The reason for that, if they would have learned from the mistake, तो मोहम्मद शमी टीम में होता. That's the punchline. Okay. Just one more thing I will add to that is no point noted. That's fine. I would say more important, tomorrow's game will be Head versus Bumrah. That's going to be the blockbuster, because Head is 70%. So here's the thing. Groin and no, I'll tell you why. Because groin or quad में क्या होता है? Quad में your pull shot is out of the equation. And groin injury में running between the wickets is gone, and also when you bend down for the uppercut, that's gone. Absolutely रे, मैं क्या कह रहा हूँ कि ठीक है, होगा उनका groin जो भी है, इनको field किया है as fit, so let us not read too much into it. Let's say I think Constas is a bigger threat than relatively or as big a threat. No, what I'm saying, he is making his debut. So let's not make someone who's making a debut as a big threat to the Indian. Let him perform in a few games, and then we can see as per his track record. But sure, don't put. If I were seriously from an Aussie perspective, I wouldn't put too much pressure on him. Let him perform, play his national game, and see how he. But I think it's going to be Head, who's the informed Aussie batsman who has taken them across the last 2 games, and versus Bumrah, who is consistently performing for India. Yeah. I think that's what will be the battle within the battle, just to see how they perform. It'll be good to see overall as well. But I believe it's going to be an exciting game, and really looking forward to it, as we all are. Right. Absolutely. So Anoop, आपने ये नहीं बताया मैच देखने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं?
तो बस आपको Goodbye. बताइए, फिर हम लोग शो एंड करते हैं। नहीं Rahul, I am not going to go to the game this time around because yeah, 40 degree के temperature में, I'll be very very honest. I'm a big lover of cricket. I would love to go to पर इतना भी MCG. नहीं। इतना भी नहीं कि like I want to go and sit in a 40 degree sweltering heat there. I'm quite happy to sit and watch it on television and enjoy the game from my home. Plus also it's the holiday season यहाँ पे, like I haven't really planned the Boxing Day. I've been to the Boxing Day test, so Mera, I mean, between all of us, I want to go and watch the Ashes live. So maybe next year when England come along, I want to go and watch Australia versus England. It's part of my bucket list. So probably the next time, but not for this game. वंडरफुल। चलिए, थैंक यू आप तीनों को, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे भी और बात की मुलाकात होगी। आज के समय के लिए, आज के डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.